hasn't had dreams of flying an airplane? It's one of the most satisfying and exciting things that a person can do in their life. But what does it take to get your private pilot's license? Before I explain the process, there's a couple things you should know. First, there's more than one type of pilot's license or certificate. They're technically certificates, and the type of certificate that you need depends on your goals as a pilot. Here's a look at some of the certificates available if you want to learn to fly airplanes. Before you can earn any of these certificates, you first have to have a student pilot certificate. We'll talk about this more in a few minutes, but these are really simple to get. It's basically a matter of meeting a few requirements and applying for it online. Sport and rec. Hello bachcho, let's read the question, and the question says that whether the given statement is true or false in the Hey fellas, catch any deers? Sorry about my friend. He's new. He's not the only one, though. All of us hunters have been subject to this terrible terminology at some point or another, and it's time we put an end to it. Proud to introduce Catchin' Deers, the brand that stands up to this phony phrasing, not by lashing out, but by embracing it for the ridiculousness that it is. There's a lot of unrest out there, and us hunters need to stick together. I shoot a stick and string, Uncle Bob shoots a lever action. How are ya? Pat over there shoots a vintage cannon. No, not that kind, the other one. Hello there! That was a test. Pat's not with us, he's a vegan and drives a Prius. Over here! Think back to all the times you've been asked if you caught anything when hunting. There's a lot of great responses, but the best one might be a deep sigh and a great hat. Hey, the best defense is a good offense. So if your favorite color is camel, if you do the laundry every day in November and you've ever fresh tested roadkill, join us and pick up a hat. They're the bomb. तो आज मैं यूज़ करने वाली हूँ 3D पेन फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम और आप सबकी रिक्वेस्ट थी कि BTS का कुछ क्राफ्ट करूँ तो लेट्स मेक अ वेरी ब्यूटीफुल की चेन ऑफ कुकी। अरे आई नो बाबा कि कुकी पिंक कलर का होता है, बट मेरे पास सिर्फ ऑरेंज, ब्लैक एंड वाइट वायर्स थे, सो प्लीज़ bear with it. वीडियो एंड तक देखना बिकॉज लास्ट में मैंने चिमी एंड कोया भी दिखाया है जो मैंने कल रात में बनाया था, और अब हम कुकी की आउटलाइन कर रहे हैं जिससे ये और भी ज़्यादा नीट एंड क्लीन हो जाएगा। तो हमारा कुकी एकदम रेडी हो चुका है और ये कितना क्यूटी पाई है, तो हम इसको किचन में फंसाएंगे और हमारी कीरिंग भी रेडी हो गई है। ओह माय गॉड! तो रात में मैंने ये जो ट्राई किया था फर्स्ट ट्राई था, एंड दीज आर माई सेकेंड ट्राई। Take that! Lawrence Kohlberg's theory claims that our development of moral reasoning happens in 6 stages. The stages themselves are structured in 3 levels: pre-conventional, conventional, and post-conventional. To understand this better, imagine a conflict at school. There is a fight in the schoolyard. 2 ninth graders are beating up Tom. Those who watch the fight are at different stages of moral development. Let's see what they do and how they justify their behavior. At stage 1, we make moral judgments based on obedience and punishment. Finn's sense of good or bad is directly linked to whether he gets punished or not. Finn sees what is happening to his friend and wants to help, but he doesn't because he is afraid the teacher may punish him if he gets caught fighting. He asks himself, how can I avoid punishment? At stage 2, we are motivated by self-interest. Mary decides to intervene and help Tom. She knows that she might get punished, but she also knows that she could become a victim herself someday. If she helps Tom now, he might help her in the future. She is asking herself, what's in it for me? At stage 3, interpersonal accord and conformity guide our moral judgment. Betty sees the fight and wants to intervene, but when she realizes that all the others are just watching, she decides not to get involved.
She wants others to see that she is a good girl who is conforming with the ethics of the community. She asks herself, what do others think of me? At stage 4, we value authority and want to maintain social order. When the teacher sees the group fighting, he immediately steps in and shouts, "Stop! Fighting at school is forbidden." He feels that, above all, it is important to follow the rules, otherwise chaos breaks out. He feels it is his duty to uphold the rules that sustain a functioning society. He asks himself, how can I maintain law and order? At stage 5, we understand rules as a social contract, as opposed to a strict order. Jessie, who watches from afar, is not sure how she feels about this. To her, rules make sense only if they serve the right purpose. Obviously, the school rules prohibit fighting, but maybe Tom deserves to finally learn his lesson. Just yesterday, he punched a young girl from grade 1. She asks herself, does a rule truly serve all members of the community? At stage 6, we are guided by universal ethical principles. All those involved now have to face the headmaster. He first explains the school rules and why they exist. He then clarifies that rules are valid only if they are grounded in justice. The commitment to justice carries with it an obligation to disobey unjust rules. The headmaster's highest moral principle is compassion. He believes that all people should learn to understand each other's viewpoints and that they don't feel alone with their feelings. He asks, what are the abstract ethical principles that serve my understandings of justice? At the pre-conventional level, Finn is driven by fear and Mary by self-interest. Both judge what is right or wrong by the direct consequences they expect for themselves and not by social norms. This form of reasoning is common among children. At the conventional level, Betty responds to peer pressure, and the teacher follows the rules. Their morality is centered around what society regards as right. At this level, the fairness of rules is seldom questioned. It is common to think like Even now, you're coming up to me, fire lighting up the sky. Feel the ground shaking underneath, trying to take me alive. Get ready for the fallout. എങ്ങനെയാണ് ടോപ്പ് സ്റ്റുഡൻസ് പഠിക്കുന്നത്? അവർക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ Every single year on results day there are a few mix-ups. There are humans involved in every single process of वेलकम टू फ्यूचर है दोस्तों, चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको बेल्ट सेंडर बना के दिखाऊंगा। दोस्तों काफ़ी मुझे कारपेंटर भाइयों के कमेंट आते हैं कोई हमें ऐसी चीज़ बना के दिखाओ जो सी यूनिक सी हो। और दोस्तों का मार्केट में काफ़ी इसके महंगे प्राइस हैं, कम से कम 30,000 40,000 की रेंज में। दोस्तों जोन सा हम बेल्ट सेंडर बनाएंगे इसमें आपका जो सा प्राइस खर्च आएगा 1000 से 1200 की रेंज में आएगा, क्योंकि आममर्रा ज़िंदगी में ड्रिल मशीनें हमारे पास आम रहती हैं। और दोस्तों इस वीडियो का जो सा लाइक का टारगेट है 10,000 का है, वो मुझे पता मेरे कारपेंटर भाई वीडियो शुरू होने से पहले लाइक का बटन दबा देंगे। चलो वीडियो शुरू करते हैं। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन का बटन दबाएं हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों ये हमने 2 इंची का कप बांध लिया है, ये आधी इंची के हैं। ये हमें कम से कम 12 पीस हमने ये इनकी कटिंग करनी है, जिस तरीके से ये मैंने कर रखे हैं। दोस्तों हमारे बिल्कुल कंप्लीट हो चुके हैं। ये दोस्तों कप के अंदर जो सा हमारा बिट था ये 6 mm का था, तो हमने इसके अंदर क्या करना है, ये वाला बोल्ट डालना है इसके अंदर। तो ये हमें 9 mm का होल करना है, तो मैंने 9 mm का बिट बांध लिया। अब क्या करेंगे, हमने अब सेंटर में इसके होल करना है।
तो जितने भी हमारे ये 12 पीस हैं, 12 में हम इसी तरीके से होल कर लेंगे। दोस्तों इन पीसों की कटिंग हो चुकी है, हमने सैंडिंग करके फिनिशिंग कर लिया। अब क्या करेंगे, इसको हम आपस में चिपकाएंगे। मैंने पहले आपको 6 पीस बोला था, अब क्या करेंगे, हम 7-7 पीस ले लेंगे, ठीक है। दोस्तों इसी तरीके से हम दूसरा रोल भी अपना तैयार कर लेंगे 7 पीस लगा के। दोस्तों दोनों पीस हमारे ये तैयार हो चुके हैं, ये देखिए इक्वल। अब क्या करेंगे, इसके अंदर हम रॉड डालेंगे, फिर क्या करेंगे, ड्रिल मशीन के अंदर बांध के इसको बिल्कुल इसका लेवल एक जैसा करेंगे। दोस्तों इसके अंदर हम बोल्ट डालेंगे, इधर की तरफ भी हमने बाछल दे देनी है और इधर की तरफ भी बाछल दे देनी है, और इनको हमने टाइट कर लेना है। ये हमने इसलिए करना है क्योंकि हमने ड्रिल मशीन के अंदर बांध के इनको चला के आगे रेग में लगा के इनका बैलेंस एक जैसा करना है। दोस्तों देखो इस तरीके से हमारी फिनिशिंग गई और इनका साइज एक जैसा आ गया और ये एक जैसे बन गया। दोस्तों ड्रम का साइज मैं आपको वर्नियर कैलिपर से भी चेक करके दिखा देता हूँ, क्योंकि जो सा ड्रम का साइज है हमें एक जैसा चाहिए। अगर मोटा पतला होगा फिर बेल्ट उतरती रहेगी। ये देखिए बिल्कुल 0-0 है, यहाँ भी बिल्कुल 0-0 है, ठीक है। दोस्तों दोनों ड्रमों की हमने सैंडिंग कर ली, एक जैसा साइज हो गया। अब क्या करेंगे, जो सा एक ड्रम है हम क्या करेंगे 25 mm का बैरिंग इधर लगाएंगे, तो 25 mm वाला बैरिंग इधर लगाएंगे, तो इसकी मदद से हम होल करेंगे, ठीक है। दोस्तों ये कंप्लीट हो चुका, हमारे दोनों ड्रम कंप्लीट हो चुके हैं। इनके अंदर क्या करेंगे, ऐसे हम अपना